हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ गोटे वीडियो नहीं आसी जहाँकि बहुत इंपोर्टेंट फॉर +2 +3 पीजीटी एंड सीपेट एंड एसएसबी नेट क्वालिफाइड नेट एग्जाम जो मैंने बीएड एंट्रेंस सीपेट एंट्रेंस नेट एग्जाम दौच से यूजफुल। तेणु भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देख +2 पिला बहुत उपयोगी जे +2 सिलेबस एगुड़ा सब रही सर्ट क्वेश्चन आसो। तेणु इंपोर्टेंट नोट्स ऑन रूसो एंड जॉन डुई। चलो ताले भिडियोटी स्टार्ट करिया। भिडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व जो मो चैनल नुआ अच्छे से अनुरोध चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करदेव। तेणु प्रथम आस देखा रूसो +2 सिलेबस रही रूसो जीन जैक्स रूसो। तेणु फास्ट पॉइंट कौन ना जीन जैक्स रूसो वाज बोर्न ऑन 28 जून 1712 इन जेनेवा सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। कौटी जन्मग्रहण करते? स्विट्जरलैंड रे जन्मग्रहण करते जेनेवा सिटी रे। तेणु पिलामाने एइथिरे तमर 3टा 4टा क्वेश्चन हो पार जे जीन जैक्स रूसो बा जी रूसो केबे जन्मग्रहण करते, केउठारे जन्मग्रहण करते, केउ सिटी रे मध्य जन्मग्रहण करते। तेणु एगुड़िक सब भल भाव में मन रखि। ही वाज द चैंपियन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। से मॉडर्न एजुकेशन चैंपियन थे। नेक्स्ट हूँ हिज फादर वाज आइजैक रूसो एंड मदर वाज सुजानी बर्नार्ड रूसो। हिज फादर वाज ए मैन ऑफ स्टडियस एंड एक्सेंट्रिक टेम्परामेंट। ही वाज ए पुअर वॉच मेकर। तांकर बापा थे जड़े गोटे घंटा घंटा मेकानिक जहाँ आम कहे। नेक्स्ट हूँ रूसो वाज ए फिलोसोफर राइटर एंड कंपोजर ऑफ 18th century. At the age of 6, Rousseau, a genius, acquired the habit of novel reading. At the age of 6, Rousseau कौन करते नॉवेल सबू पढ़ुले। नेक्स्ट हूँ फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 29 years, he went about aimlessly from one place to other, meeting different types of people and visiting different places. Next point is he became a tutor in 1741 but was not successful. Thus, he developed a lasting interest in education and its problems. Next point is in 1744 he married a servant girl who gave him 5 children. The year 1750 came as a landmark in his life. When he was at the age of 38, he wrote a book, The Progress of Art and Science. Next, in 1753, he wrote his second book named The Origin of Equality Among Men. In 1759, a romance was published by him named The New Voyage. Next point is in 1762, he published great books entitled Social Contract and Emile. Emile होचे तांकर सबुठारु मुख्य बही जोटा कि से पब्लिश करथिले। और concerning education is a treatise on the education of the whole person for citizenship. Next is meaning of education according to Rousseau. Rousseau कौन कहते ना education is the child's development from within. His concept of education is naturalistic. According to Rousseau, education should be considered as the process of development into an enjoyable, rational, harmoniously balanced, useful and hence natural life. Negative education according to Rousseau. Negative education means to allow the child to move freely in nature so that he is able to perfect the organs of his body which are the instruments of acquiring knowledge. Negative education क्वेश्चन आसे पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन एवं फिल इन द ब्लैंक्स जोड़ा आसे जे हु प्रोपाउंडेड नेगेटिव एजुकेशन बा हु इज द फाउंडर ऑफ नेगेटिव एजुकेशन बा फॉलोअर ऑफ नेगेटिव एजुकेशन. Then next is characteristics of negative education. The characteristics of negative education includes to lose time wisely, to place for book learning, no place for book learning, no formal lessons, no habit formation, no moral education, no social education, no formal discipline, back to nature. से कहते नेचर को फॉलो कर, बैक टू नेचर, नेचर को फॉलो कर जहाँकि फॉलो नेचर, नेचर रु पिला सबू शिखिपर एवं ऑलराउंड डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल थ्रू नेचर. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव एजुकेशन. इन द वर्ड्स ऑफ रूसो, पॉजिटिव एजुकेशन इज वन दैट टेंड्स टू फॉर्म द माइंड प्रीमैच्योरली
and to instruct the child in the duties that belong to man. Positive education includes the following characteristics. What are they? First is stress on verbalism, stress on duty, morality and religion, stress on strict discipline, stress on social education, and emphasis on formation of habits. Next is aims of negative education. What are the aims of negative education of Rousseau? The first is development of a free thinking. Next is integrated development of a child. Next is learning from own experience. तापरे aims of education includes self expression, physical development, imparting pleasure, moral development, development of sense organs, adjustment to environment, harmonious development of the child, and development of self dependence. Then curriculum. Curriculum includes education for infancy up to 5 years, education for childhood from 5 to 12 years, education for boyhood 12 to 15 years, and education for adolescents from 15 to 24 years. ତେଣୁ ରୁଷୋ କରିକୁଲମକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବା ଅପ୍ ଟୁ 5 ଇୟର୍ସ, ଗୋଟେ 5 to 12 years, 12 to 15 years, and 15 to 24 years. Then next is methods of teaching according to Rousseau. Rousseau propounded the learning by doing method, individual instruction method, heuristic method, direct experience of the child, example is better than precept, playway method, observation method, and social participation method. Rousseau's contribution to education. कौन कौन तांकर कंट्रीब्यूशन थिला अवदान थिला शिक्षा प्रति ना नेगेटिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, education should be provided in a natural setting, learning takes place in a joyful atmosphere, no physical punishment, education should be provided according to the growth and development of the child, against the traditional books. ଏବେ ମାନେ जो खाली थियोरिटिकल बा बुकिश नॉलेज जो दिया होची पिला माननको तार से विरोधी थेले. नेक्स्ट होची रूसो डाइड ऑन 2 जुलाई 1778 एट एर्मननविले ऑफ फ्रांस रे मरी थे. तापर नेक्स्ट आम देखा जॉन डुई. कौन देखा ना जॉन डुई भी आमर प्रति परीक्षा +2 पिला रही, +3 पिला रही, बीएड एंट्रेंस सीपेट एवं पीजीटी सबुथ SSB नेट सबुथ आसूचे. तेणु भल भाव वीडियो को देख और नोट प्रस्तुत कर दियो. फास्ट हूँ जॉन ड्यूई वाज बोर्न ऑन 20th October 1859 in Burlington city of Vermont state. He was the eminent American philosopher, thinker, psychologist, and also educationist. He was known as the father of progressive education. এটা ভালো ভাবে মনে রখিদেব পিলামানে. হি ওয়াজ দি ফাদর অফ প্রোগ্রেসিভ এজুকেশন. কোশ্চিন সবু পরীক্ষার আসিপারে. দিস ইজ দ ইম্পর্টাট থিং. হু ওয়াজ নোন আজ দি ফাদর অফ প্রোগ্রেসিভ এজুকেশন? জন ডুই ইজ দ ফাদর অফ প্রোগ্রেসিভ এজুকেশন. হিজ প্যারেন্টস ওয়ার আর্চিবাল্ড স্পারেগ ডিউই অ্যান্ড লুসিনা আর্টেমিসিয়া রিচ ডিউই. Next is he passed his childhood in a village school and graduated from the University of Vermont in 1879. He started his career as a school teacher. प्रथमे से गोटे स्कूल टीचर रही थे. He joined Johns Hopkins University and obtained the PhD degree in philosophy. Next is he worked as a professor of philosophy at the Universities of Minnesota, Michigan, and Chicago. Next is in 1896 he founded the Ideal University Laboratory School. In this school he applied and tested his educational philosophy and theories. से स्कूल से एजुकेशनल फिलोसफी और थियोरी की सब अप्लाई करुले. In 1904 he was appointed as professor of philosophy at the University of Columbia, New York, and held the post up to 1930. 1930 जाए से प्रोफेसर भाव में रही थे. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई. अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस. ही ओपाइंड एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑल दोज कैपेसिटीज विथ द इंडिविजुअल व्हिच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज
possibilities. जॉन डुईज इंपोर्टेंट वर्क्स कौन सब से कौन कर फास्ट इज माई पेडागोजी की क्रीड इन 1897 स्कूल एंड सोसाइटी 1900 द चाइल्ड एंड द करिकुलम 1956 हाउ वी थिंक 1910 स्कूल ऑफ टुमोरो 1953 डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 Reconstruction in philosophy 1920, Experience and Nature 1925, Freedom and Culture 1939, Education Today 1949 and Moral Principles of Education 1959. तेणु पिलाने स्कूल एंड सोसाइटी बहीटा किए लिखिं बोली बहुत परीक्षार आसे तेणु यही सब जो बहीर ना सब रहा ये बही ना गुड़ाक भल भाव में मन रखिथ जे जॉन डुईंकर ये सब लेखा. नेक्स्ट हूँ लाइफ फिलोसफी ऑफ जॉन डुई. चेंजिंग रियलिटी, फिक्स्ड एंड इटर्नल वैल्यूज और ट्रूथ, इंस्ट्रूमेंटल फिलोसफी, फेथ इन डेमोक्रेसी, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, थॉट एंड एक्शन आर कॉम्प्लीमेंटारी. नेक्स्ट आसला एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जॉन डुई. कौन से कहते ना एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, education as a social efficiency, and education is sublimation, and education is continuous reconstruction of experience. एटा होची सबुठार important continuous reconstruction of experience. Then aims of education according to John Dewey. Aims of education includes individual aim, social aim, economic efficiency and social efficiency, negative morality, positive morality, creation of values, harmonious development of the child to enrich present life. Then these are the aims of education according to John Dewey. Next is curriculum. Curriculum includes first period from 4 to 8 years. What are the subjects or what are the tasks? These are simple reading, writing, arithmetic, occupation from the home and ordinary farm work. Second period which is from 8 years to 12 years. Social studies, experimental science. Next is third period from 12 years onwards. Problem of agriculture, consumption, production, transportation, exchange, distribution, etc. Then methods of teaching or methods of instruction. Activity method, play way method, experimental method, heuristic method, learning by doing, project method and direct method. These methods are propounded by John Dewey. Then criticism to John Dewey's work. No clear-cut aims of education, much more importance to materialism, puts more emphasis on individual differences, rejects all the formal education. These are the criticism to John Dewey's work. Next, the last point is he died on 1st June in 1952 in New York. This is all about your Rousseau and John Dewey as educational philosophers.